एंड उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि हमको द टोटल नंबर ऑफ द स्टेप्स निकालने थे व्हेन दैट नंबर रीचेस टू ज़ीरो, लाइक वी हैव लुक्ड फॉर द नंबर 10। तो हम अब हर स्टेप में क्या कर सकते हैं, या फिर यू कैन डिक्रीज अ नंबर बाय वन. So when I decrease the 10 by 1, it becomes 9. Or you can replace it by your prime divisor. So 10, the prime divisor of the 10 can be 5. Okay. Now what will happen? The first part was breaking the problem. So this is a way we break out this problem. Okay. Now we need to solve this sub problem 1. Okay. And we need to solve this sub problem 2. Okay. And then out of which is minimal, which is smaller, जो छोटा होगा उसको integrate कर देंगे with this step. Okay. And for that thing, so first is the breaking the problem, second is the sub problem, making it as a sub problem. Okay. Then finding the minimum out of the sub problem, that is minimum. Okay. And then fourth is adding plus 1, so that I'm able to count this step also, 10 also. Two step milake, these four step makes up this formula. Okay. So this was the formula that we concluded in the last term. Okay. If my n is equal to 0, n is equal to 0 means 0 wants to go, 0 अपने आप को क्या करना चाहता है, 0 अपने आप को 0 में कन्वर्ट करना चाहता है. Okay. So 0 is already 0. So how many steps? We need to take 0 steps. Okay. Now let's say if my n is equal to 1. Okay. If your n is equal to 1, means 1 wants to convert to 0. Okay. So 1 will be having a first chance ki 1 decreased by 1 becomes 0, or it can have its prime divisors. Okay. Prime divisor of the 1, there is nothing. So this is an invalid zone. Okay. So we have only one way to convert 1 to 0, right? So this is for 1. For n is equal to 1, step taken is equal to 1. Okay, let's see for the 2. So if my n is equal to 2, means 2 wants to converge to 0. So for the 2, it can be converted to 1, that is n minus 1, और it can use the PD. और अगर 2 PD यूज करता है तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ द 2 विल बी 2 itself. दैट इज ऑल्सो अ इनवैलिड स्टेट, क्योंकि 2 को पहले से ही हम विजिट कर चुके हैं. Okay. I have broken down my 2 problem and I got this one under invalid state. And what I can see from here, ये वाला जो सब प्रॉब्लम है, how to solve for 1 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया था. Okay. And from here we were getting the result was that I need to take only one way. So result for this small part will be taking a one small step, and this step will be integrated with my this step when 2 is converting to 1. So 2 converts to 1 one way, and this initial answer, so 1 plus 1 becomes 2. So final answer will be taking a 2 steps. I need to take 2 steps. Okay. So for n is equal to 2, step taken is also equal to 2. Now let's see for the 3. चलो, लेट्स कंसीडर फॉर जब मेरा n 3 होता है. अगर 3 होता है तो क्या होगा, 3 minus 1, दैट कैन गो फॉर द 2 सब प्रॉब्लम. या फिर क्या हो सकता है, 3 का प्राइम डिवाइजर ऑफ द 3 विल बी 3 itself, means a invalid state. This is your invalid state. Okay. Because 3 is already visited. Okay. So now I am having this first step. इसके लिए क्या होगा, डेप्थ 1 है, तो दिस इज माई 1 plus what, the solution of the 2. Okay. And the solution of the 2, क्या निकला था यहाँ से, solution of the 2 was taking the number of the steps is equal to 2. So I will be doing for the 3 1 plus 2.
steps. Okay, that becomes 3. So answer for the n is equal to 3. N is equal to 3. So 3 will be taking, step taken is equal to 3. How I got it? From the dp of 2 plus 1. Okay. Now let's see the example for n is equal to 4. So this is my n and n is equal to 4 this time. So 4 can also have two chances. 4 will be becoming 3 या फिर 4 क्या हो सकता है उसका प्राइम डिवाइजर. अगर ये 4 प्राइम डिवाइजर हुआ तो क्या होगा डिवाइजर ऑफ द 4 will be 2. Okay. Now again what we can see from here, we need to solve the sub problem of these 3, we need to solve the sub problem of the 2, and we will see इनमें से छोटा कौन सा है. Is d1, let's say depth of this subproblem is d1 and depth of this subproblem is d2. So we will be considering d1 if d1 is less than d2. अगर d1 d2 से छोटा है तो क्या कंसीडर करेंगे d1. अगर d2 d1 से बड़ा है, okay, if it's reverse then we will be considering this one. So which depth is smaller, we will considering that solution. So we got a chance to know कि sub problem of the 3 will give me 3 number of these steps as a result. Okay. And solving 2 sub problem will give me 2 steps. Okay. And the final concatenation is for this fourth. Like 4 wants to reach 3 sub problem and 4 wants to undergo the 2 sub problem. So this is the first step, that is 1 plus. So 1 plus 2 and 1 plus 3. So out of 1 plus 2 and the second one is 1 plus 3, which is small? This is small. 1 plus 2 step is small. So I will be writing for n is equal to 4, step taken is equal to step taken is equal to 1 plus 2, that is equal to 3. And how we did so? Minimum of dp of 2 comma dp of 3. Okay, means that minimum of the problem of n minus 1 by considering n minus 1, that is 3, and minimum of your prime divisor problem. And then what we did, then we have added 1 also. Okay. So this is our addition of 1. Okay. For the code writing, I will be considering a formula, that is problem of n. n वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, प्रॉब्लम ऑफ n माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, जज आउट करेंगे, और प्रॉब्लम ऑफ सब प्राइम फॉर द n. ओके, दीज टू आई विल बी जजिंग इट आउट, और उसमें से क्या करेंगे, मिनिमम डेप्थ वाला सोल्यूशन लेंगे और +1 कर देंगे. ओके, एंड वी ऑल्सो नो कि हमारा जो बेस केस है, ओके, दैट इज इफ n नंबर अगर 0 है तो हाउ मेनी स्टेप्स द 0 विल बी टेकिंग, that is 0. Okay, with this information let's try to write the code for this whole situation. Okay, तो let's start to code. तो सबसे पहले I need to consider a number. Okay, let's say my number is 10. I have written कि मेरा जो नंबर है वो 10 है. अब क्या करना है, अब उस नंबर के लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा दैट विल बी प्रोवाइडिंग मी number of these steps, minimum number of these steps. So def min steps to reach 0. Okay, now I'm considering this n here. सबसे पहले तो हम एक अपनी बेस केस को स्टेट करेंगे. दिस विल बी योर टास्क प्रॉब्लम में. इस प्रॉब्लम में हमको मिनिमम नंबर ऑफ दी स्टेप्स निकाले थे. ओके,
So you consider, one thing that you need to consider is minimum number of these steps. Okay, minimum steps का means है it is an optimal choice. They are asking me a optimal choice result. Okay, optimal choice का मतलब है I can use a concept of DP. DP का concept I can use for coding it. Okay, okay, so what is in the DP concept? So inside the DP concept, first of all, you will be writing your base case. Okay, the सबसे छोटा वाला case या फिर a case where everything is failing down. Okay, the second thing is what is inside the DP. DP means we can use DP here. हम यहाँ पे DP क्यों use कर रहे हैं? Because what you can say, for solving a problem that is currently, for solving the current problem, अभी का problem solve करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? Previous results को analyze करना पड़ेगा. What I mean by the previous results, solving the problem of the 10, I was undergoing a study of the 9 and undergoing a study of the 5. Okay, so that's why I can use the concept of DP. So if I am able to study this, okay, means I am anyway storing its result. अगर मैं इसको स्टडी कर पा रही हूँ, एनालाइज कर पा रही हूँ, तो मैंने क्या किया होगा, इसके आंसर्स को पहले से ही कहीं पे स्टोर किया होगा. सो आई नीड अ परमानेंट स्टोरेज. इन डीपी you need a permanent storage of results. Okay, and results starting from initial और फर्स्ट स्टेज. ओके, पहले स्टेज से हम क्या कर देंगे, अपने रिजल्ट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, एंड देन वी विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. तो सबसे पहले तो हमको अपना बेस केस लिखना है. व्हाट इज आवर बेस केस? सबसे छोटा क्या था कि जीरो ही क्या ट्राई कर रहा है, कि जीरो तक पहुंचने को ट्राई कर रहा है. सो इफ योर नंबर इज जीरो, तो उसको कितने नंबर ऑफ दी स्टेप्स लगेंगे? जीरो स्टेप्स लगेंगे, बिकॉज वो पहले से ही जीरो स्टेज में है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज आई एम क्रिएटिंग अ स्टोरेज. एक परमानेंट स्टोरेज बनाना है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, सबसे पहले स्टेज से. स्टेज मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग zeroth case. Zeroth case means zero number. So you will be storing here for zero. जीरो को कितने स्टेप्स लगेंगे टू रीच टू जीरो? यू हैव एन आंसर दैट इज जीरो. ओके, सो दिस इज द थिंग दैट आई नो, और मैंने इसको बिना किसी फॉर्मूले के आई हैव रिटन इट. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज फॉर द फॉर्मूला. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ये था. ओके, लेट्स राइट दिस फॉर्मूला. आई ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला. तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं. प्रॉब्लम ऑफ द एन को अगर सॉल्व करना हो, तो व्हाट आई एम कंसीडरिंग is the minimum of problem of n minus 1 plus 1 comma problem of subprime, okay, of n plus 1. Okay, I have broken down my solution like this. That okay, so now let's decode this formula now. See it, what it is, what is this equation. So if my number is 10, I will be dividing it into 9, or I will be dividing it into the 5. तो ये n-1 वाले को 9 कंसीडर कर सकते हैं और इसको 5 कंसीडर कर सकते हैं. ओके, तो अभी तक हमने प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन कर दिया है? अभी तक हमने डेप्थ 1 तक इसको एनालाइज किया है. ओके, बाय डेप्थ 1 आई मीन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द 10 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what you have done is you have solved up till now. अभी तक आपने क्या सॉल्व किया है? आपने 10 से 9 तक का स्टेप देखा है, 10 से 9 तक का स्टेप देख लिया है, अप टिल द D1 डेप्थ में. दिस इज ऑल दी टॉक अप टिल D1 डेप्थ. So at the D1 step, D1 depth, you have done what? You have
just seen a step how to convert 10 to 9, या फिर you have seen how to convert 10 to 5. Okay, so these are the things that you have analyzed. Okay, and उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद you will be adding +1 here and +1 here. Why you are adding +1? To demonstrate this 10. आप ये 10 को include करोगे. Okay, and then you will be considering the minimum of these steps. Okay, at the depth D1. So this is the whole explanation for this uh, division or the depth formation we have done here. Okay, so now let's start with the coding. So हमने let's break down this formula again. A problem of 10 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे थे? Okay. From the depth 1 analysis means this analysis. Depth 1 में हमने इतनी चीज़ें समझी. Okay. तो I have started from 10 to 9. I have learned कि 10 से 9 पे क्या results होंगे. So I have a thing that is problem, how to solve a problem by going from 10 to 9. Second is क्या सीखा? सेकेंड में हमने ये सीखा है कि 10 से 5 तक जाने में how I will be going to travel. So from 10 to 5, how to do things. And then what I was doing, I was adding it by 1. So let's add it by 1. +1 here, comma, +1 here. And then what I was doing, then I was considering the minimum out of this one and the second depth. So I will be considering minimum of these two. Okay, so this is the equation. ये वाली equation किसके लिए है? Problem. अगर मेरी problem 10 की होती है, then I will be writing down a formula like this. Okay, let's generalize this. इस formula को generalize करते हैं. तो I can write now problem of n is equal to minimum of problem of n minus 1. Okay, going to n minus 1 step, or +1 comma problem of, that is problem of n means your actual number जो आपको number input पे दिया गया है. Okay, so that number minus your prime divisor. Okay, like 5 was a prime divisor of the 10. Okay, one of the prime divisor, and ये prime divisor आपका कोई भी prime divisor हो सकता है from your set. Okay, and then you were adding it by, and then after solving this problem what you did, you added it by 1. Okay, and you were considering the minimum out of this. Okay, now final formula looks like this. Now we are left with the coding part. In the coding part also हमने dp यूज किया है और हमने अपना first step स्टोर कर लिया है. Now let's store something for the from the 1, that is from 1 till nth step. Okay, so for copy it and paste it here. Okay, now I will start to go from I in range from 1 till n, and what to do, I will be solving this problem by having an intuition of I want to solve problem of n minus 1. Okay, n minus 1 को solve किया और first वाले root से integrate कर दिया. Okay, so for this you need to write here sub problem 1 solution is equal to dp of I minus 1. Like अगर हमें 1 के लिए find करना है तो I am writing 0. 1 for 1 you will break down it into 0 and add it with the first step +1. And so this is, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने बस इतना किया है कि 10 को 9 पे कैसे ब्रेक करेंगे, 10 को 9 पे कैसे ब्रेक करेंगे और उसके बाद 10 को इंक्लूड भी करेंगे सोल्यूशन में. दैट वी हैव रिटन. हाउ वी हैव रिटन?
by saying dpi minus 1 and plus 1 for including your 10, this final level. Okay, now I have to write the code for how the 10 will be reaching to this 5. Okay, for that, first of all I need to have all the divisors, सारे prime divisors चाहिए. Okay, so what will be the code all about for divisors or the divisor in prime divisor set? Okay, there can be more than one divisor, prime divisor for a number, and I am finding a prime divisor for a number that is current number is I. So I के लिए prime divisor निकाला. So let's say I am having two divisor for a number that is 5 and 2. Okay, and always अगर आपके पास divisor होगा किसी number का, तो आपका क्या होगा, वो divisor हमेशा उस current number से small होगा. Okay, this is a check to see कि divisor there is actually any divisor for that number or not. तो अगर डिवाइजर होता है तो क्या होगा, हमारा सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम टू का सोल्यूशन फॉर्मुलेट हो सकता है. ओके, वी कैन परफॉर्म पीडी फॉर दैट. सो आई विल बी सेइंग in the sub problem 1 solution I need to append, I need to add something, and what I need to add, मुझे add करना पड़ेगा sub problem 2 का solution. So what I am exactly doing is sub problem 1 plus sub problem 2. Okay, and what will be the solution for the sub problem 2 by this formula? यहाँ पे क्या कर रहे थे, n minus prime divisor. So here what it will be, dp of I, the number current number minus में prime divisor. What is the prime divisor? सारे जो divisors होंगे वो कहाँ पे होंगे, divisor के अंदर. So I will be doing I minus divisor. Okay, and then I will be adding it by plus 1. So this is your plus 1. Okay, now अब क्या करना है, अब मेरे पास क्या है, अभी तक हमने क्या कोड लिख लिया, अभी तक हमने 10 से 9 वाला स्टेप भी लिख लिया और ये 10 to 5 वाला भी स्टेप लिख लिया. सो ये भी रेडी है, ये भी रेडी है. नाउ आई एम रेडी विद दीज टू. ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस ऑल्सो होल क्लियर एंड दिस ऑल्सो होल क्लियर. नाउ आई नीड टू फाइंड अ मिनिमम. बस मुझे क्या करना है, अब मिनिमम निकालना है. हाउ टू फाइंड अ मिनिमम ऑफ दिस प्रॉब्लम? सो दिस इज होल फॉर लूप. बस यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप. सो इस फॉर लूप में क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने n-1 दैट इज सब प्रॉब्लम 1 के लिए फॉर्मुलेट किया और एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, लिस्ट के अंदर अपनी सोल्यूशन 1 को अपेंड कर दिया. सो माई लिस्ट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. ओके, फिर सेकंड में क्या किया, हमको सब प्रॉब्लम 2 भी चाहिए था. ओके, सो नाउ वी हैव दिस सब प्रॉब्लम एंड फिर हमने क्या करा, इस लिस्ट के अंदर उसको अपेंड कर दिया, मीन्स इंक्लूड कर दिया. सो आई एम हैविंग टू सोल्यूशंस लाइक दिस मिनिमम. ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब मुझको क्या करना है, अब मुझको मिनिमम निकालना है. दिस इज मिनिमम, दिस n-1 is minimum, or this prime divisor would be the minimum, which is one will give me the minimum result. Okay, and इसको कहाँ पे स्टोर करना है, प्रॉब्लम ऑफ n के अंदर, मीन्स ith current problem. So that is like dp of I is equal to minimum of the two solutions. and solutions कहाँ पे है, solutions आपके इस list के अंदर है. So problem 1 solve. Okay, so now I am having the final result for the current situation, but मेरा number क्या है, number is n. So after this what you will be doing, हमको इस पूरे के बाद क्या करना है, लास्ट वाले n के लिए result I need to print. Okay, now what I am getting here, prime divisor is not defined. So for the prime divisor मैं क्या कर रही हूँ, I am using the previous code.
Okay, so this is our previous code. Let's copy it and paste this function here. Now let's try to run. Okay, import maths. This is the problem. I'm getting 5 for this 10. So number of these steps, that is equal to 5. Okay, so in this way you will be coding out the solution of this problem. This is going to be your full code. So this is your prime divisor code, the earlier code. Okay, what we have did today is just used the base condition, that is n agar 0 hai तो it will be taking zero number of these steps, and then I have used the storer. एक स्टोर यूज किया है जहाँ पे हम फर्स्ट टाइम से लेके लास्ट टाइम तक सारे रिजल्ट स्टोर करते हैं. सो एट द फर्स्ट टाइम आई नो कि क्या स्टोर करना है. फॉर द जीरो इट विल बी टेकिंग जीरो स्टेप्स, एंड देन वन से क्या करना है, वन से हमको फॉर्मूला को यूज करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज योर फॉर्मूला. वन से क्या होता है, वन से मैं एक लिस्ट मेंटेन कर रही हूँ फॉर ईच केसेस, एंड इन दैट लिस्ट I am maintaining two choices. Okay, choice one क्या है? choice one मेरा n minus one वाला step है, like this is your step. Okay, and for the choice two, this whole thing डिवाइजर को पिक करेगा, उसके बाद मैनिपुलेट करेगा, एंड इट विल बी अपेंडिंग द रिजल्ट, एंड आई विल बी सीइंग द मिनिमम ऑफ दिस रिजल्ट, minimum of the divisor case and n minus 1 case, and that will be the final result for the my current step. मेरे current number का final result मिनिमम से सॉल्व होगा. एंड देन आखिरी में क्या करना है, आखिरी में मैंने बस nth नंबर का रिजल्ट प्रिंट करा दिया है. So this is a way you need to solve this whole problem. This is your full code. Ready. You can check for another, like if your number is 4. Okay. Okay. Let's check for 4. अगर 4 होता तो क्या होता? तो if this is your 4, here it will be 4, and run it. I'm getting a result that is 3. dp of 2 और dp of 3 का क्या किया है इसने? Minimal निकाला है. Okay. तो I think so our code works.